Om Jnanam Timidandasya Jnana Janashalakaya Chakshurannanviltamena Tasmai Shri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobishtham Sthapitamena Bhutale Swarupam Kadamayam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamlam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahakan Raghunatha Vitam Tam Sajevam Sadhvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pradan Sahagan Lalita Shri Vishakha Vitam Cha Namam Vishnu Padaya Krishna Pasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvadi Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatadeshatarine He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopayakanta Radhakanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishbhanasute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatru Bhascha Kripa Sindhuve Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are starting with Bhagavad Gita 9.10. Nayadhyeshana prakriti suyate sacharachram hetu nanena kontaya jagad parivartate. The material nature is working under my direction, O son of Kunti, and is producing all moving and moving beings. By its rule, this manifestation is being created and annihilated again and again. Mayad Mayadhya Krishna Mayadhya Krishna means under my supervision. Mayadhyashin means my supervision. Material nature cannot act so wonderfully unless the Lord's hand is behind it. We cannot give any example of material things automatically working. Matter is inert, and without spiritual touch, there is no possibility of its acting. Matter cannot act independently or automatically. Machines may be very wonderfully constructed, but unless a man touches the machine, it cannot work. And what is that man? He is the spiritual spark. Without spiritual touch, nothing can move. Therefore, everything is resting in Krishna's impersonal energy. Krishna's energy is impersonal, but he is a person. We often hear a person performing wonderful actions, yet despite of energetic accomplishments, they still remain person. If this is possible for human beings, why is it not possible Supreme Lord? We are all persons, but we are dependent upon Krishna, the Supreme Person. We have often seen pictures of Atlas, a stout man bearing a large planet on his shoulder and struggling very hard to hold it up. We may think that because Krishna is maintaining the universe, he is struggling under its burden like Atlas. But this is not the case. Yes, Swati Mataji. हरे कृष्ण भगवद गीता 9.5 यहाँ से पढ़ना है ना? Yes, जी Mataji. भगवद गीता 9.5 नाचा मतस्थानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरम भूत ब्रह्मच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, still myself is the very source of creation. Although all beings in the universe are resting in Krishna's energy, still they are not in him. Krishna is maintaining all living entities, and his energy is all pervading, yet he is elsewhere. This is Krishna's inconceivable mystic path. He is everywhere, yet he is aloof from everything.
We can perceive his energy, but we cannot see him because he cannot be seen with material eyes. However, when we develop our spiritual qualities, we sanctify our senses so that even within this energy we can see. Electricity, for instance, is everywhere and an electrician is capable of utilizing it. Similarly, Similarly, the energy of Supreme Lord is everywhere, and when we become transcendently situated, we can see God eye to eye everywhere. That spiritualization of the senses is possible through devotional service and love of God. The Lord is all pervading all over the universe and is within the soul, the heart, water, air, everywhere. Thus, if we make an image of God in anything, clay, stone, wood, or whatever, it should not be considered to be just a doll. That also is God. If we have sufficient devotion, the image will also speak to us. God is everywhere impersonally. Maya tatam idam sarvam. But if we make his personal form from anything, and or if we create an image of God within ourselves, he will be present personally for us. In the Shastras, there are 8 kinds of images recommended, and any kind of image can be worshipped because God is everywhere. One may protest and ask, why should God be worshipped in images and not in his original spiritual form? The answer is that we cannot see God immediately in his spiritual form. With our material eyes, we can only see stone, earth, wood, something tangible. Therefore, Krishna comes as Archa Vigra, a form conveniently presented by the Supreme Lord in order for us to see Him. The result is that if we concentrate upon the image and make offerings with love and devotion, Krishna will respond through the image. Okay. There are many instances of this happening. In India, there is one temple called Sakshi Gopal. Krishna is often called Gopal. The Gopala Murti or statue was at one time located in temple in Vrindavan. Once two Brahmanas, one old and one young, went to visit Vrindavan on a pilgrimage. It was a long trip, and in those days there were no railways, so travelers underwent many hardships. The old man was much obliged to the youth for helping him on the journey, and upon arriving in Vrindavan, he said to him, "My dear boy, you have rendered me so much service, and I am much obliged to you. I would like very much to return that service and give you some reward." "My dear sir," the youth said, "you are an old man just like my father. It is my duty to serve you. I don't require any reward." "No, I am obliged to you, and I must reward you," the old man insisted. He then promised to give the young man his daughter in marriage. The old man was a very rich man, and the youth, although a learned Brahmana, was very poor. Considered this, the youth said, "Don't promise this, for your family will never agree. I'm such a poor man, and you are aristocratic. So this marriage will not take place. Don't promise this way before the deity." Yes, Mataji. The conversation was taking place in the temple before the deity of Gopal Krishna, and the young man was anxious not to offend the deity. However, despite the youth's pleas, the old man insisted on the marriage. After staying in Vrindavan for some time, they finally returned home, and the old man informed his eldest son that his younger sister was to be married to the poor Brahmana youth. The eldest son became very angry. "Oh, how have you selected that pauper as husband for my sister? This cannot be." पढ़ूं क्या आगे? Yeah, G. The old man's wife also came to him and said, "If you marry our daughter to that boy, I shall commit suicide." The old man was thus perplexed. After some time, the Brahmana youth became very anxious. He has promised to marry his daughter to me, and he made that promise before the deity. Now he is not coming to fulfill it. He then went to see the old man and remind him of his promise. "You promised before Lord Krishna," the youth said, "and you are not fulfilling the promise. How is that?" The old man the old man was silent. He began praying to Krishna, for he was perplexed.
He did not want to marry his daughter to the youth and cause such great trouble within his family. In the meantime, the elder son came out and began to accuse the Brahmana youth. You have plundered my father in the place of pilgrimage. You gave him some intoxicant and took all his money, and now you are saying that he has promised to offer you my youngest sister. You rascal. पढ़ूं आगे? Hmm. Uh, In this way, yes, yes. In this way, there was much noise, and people began to gather. The youth could understand that the old man was still agreeable, but that the family was making it difficult for him. People began to gather about because of the noise which the elder son was raising, and the Brahmana youth began to explain to them that the old man made his promise before the deities, but that he could not fulfill it because the family was objecting. The eldest son, who was an atheist, suddenly interrupted the youth and said, "You say that the Lord was witnessing. Well, if he comes and bears witness to this promise of my father's, you can have my sister in marriage." The youth replied, "Yes, I shall ask Krishna to come as a witness." He was confident that God would come. An agreement was then made before everyone that the girl would be given in marriage if Krishna came from Vrindavan as a witness to the old man's promise. The Brahmana youth returned to Vrindavan and began to pray to Gopal Krishna. "Dear Lord, you must come with me." He was such a staunch devotee that he spoke to Krishna just as one would speak to a friend. He was not thinking that Gopal was a mere statue or image, but he considered him to be God himself. Suddenly the deity spoke to him. "How do you think that I can go with you? I am a statue. I cannot go anywhere." "Well, if your statue can speak, he can also walk," the boy replied. "All right then," the deity said. "Finally, I shall go with you, but on one condition. In no case shall you look back to see me. I will follow you, and you will know that I am following by the jingle of my leg bangles." The youth agreed, and in this way they left Vrindavan to go to the other town. When the trip was nearly over, just as they were about to enter his home village, the youth could no longer hear the sound of the bangles, and he began to fear. "Oh, where is Krishna?" Unable to contain himself any longer, he looked back. He saw the statue standing still. Because he looked back, it would go no further. He immediately ran into the town and told the people to come out and see Krishna, who had come as a witness. Everyone was astounded that such a large statue had come from such a distance, and they built a temple on the spot in honor of the deity. And today, people are still worshipping Sakshi Gopal, the Lord, as a witness. Yes, Mataji, please complete. We should therefore conclude that because God is everywhere, He is also in His statue, in the image made of Him. If Krishna is everywhere, as even the impersonalist admit, then why is not He in His image? Whether an image or a statue speaks to us or not is dependent on the degree of our devotion. But if we choose to see the image merely as a piece of wood or stone, Krishna will always remain wood or stone for us. Krishna is everywhere, but as we advance in spiritual consciousness, we can begin to see him as he is. If we put a letter in a mailbox, it will go to its destination because the mailbox is authorized. Similarly, if we worship an authorized image of God, our faith will have some effect. If we are prepared to follow the various rules and regulations, that is to say, if we become qualified, it is possible to see God anywhere and everywhere. When a devotee is present, Krishna, by his omnipresent energies, will manifest himself anywhere and everywhere. But when his devotee is not there, he will not do this. There are many instances of this. Prahlad Maharaj saw Krishna in a pillar. There are many other examples. Krishna is there. All that is required is our qualification to see him. Krishna himself gives an example of his omnip- omnipresence in this way. Okay. Pardon? Uh, Ashwini Guruji.
Hare Krishna. Bhagavad Gita 9.6 यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र वो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मध्यस्थानि युपादराया. As the mighty wind blowing everywhere always rests in ethereal space, know that in the same manner all beings rest in me. Everyone knows that the wind blows within space, and on earth it is blowing everywhere. There is no place where there is no air or wind. If we wish to drive out air, we have to create a vacuum artificially by some machine. Just as the air is blowing everywhere in space, so everything is resting within Krishna. If this is the case, then the material creation is dissolved where it goes. Bhagavad Gita 9.7 Sarvabhutani kauntaya prakartim yanti mamikam kalpakshay punstani karpadao visarjamayam. O son of Kunti, at the end of the millennium, every material manifestation enters into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I again create. Krishna sets his nature, Prakriti, into motion, as one may wind up a clock, and when nature unwinds, it absorbs into the Lord. The spiritual creation, however, is not like this, for it is permanent. In material creation, everything is temporary. Just as our bodies are developing due to spiritual spark that is within, the whole creation is coming into being, developing and passing out of being due to spirit of the Lord which is within it. Just as our spirit is present within the body, the Lord is present within the universe as Paramatma. Due to presence of Shirodakshai Vishnu, the material creation exists. Just as due to our presence, our bodies are existing. Sometimes Krishna manifests the material creation and sometimes he does not. In all cases, its existence is due to his presence. Yes, we are moving to the next knowledge by way of Mahatma's great soul. Swati Mataji. The presence of Krishna in all aspects of the creation is perceived by the Mahatmas, the great souls, who are always engaged in the worship of Krishna. As Krishna himself states, these great souls are conversant with the confidential knowledge found in the 9th chapter of Bhagavad Gita, and they know Krishna to be the source of all things. पढ़ूं आगे? Uh, Prabhuji, Okay, Bhagavad Gita 9.13 Mahatmanastu mam partha devim prakrtimashita vajantinanya manso gyatva bhuta divavyam. O son of Partha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. The great soul knows without a doubt that Krishna is the Supreme Personality of Godhead and that He is the origin of all emanations. The Vedanta Sutra states, Athata Brahma Jigyasa. Human life is meant for inquiring about Brahman. At present, we are all engaged in studying temporary, small things. Brahman means the greatest, but instead of concerning ourselves with the greatest, we have become enmeshed in trying to solve the animal problems of eating, sleeping, defending, and waiting. These small problems are automatically solved. Even the animals are enjoying mating, sleeping, eating, and defending. The arrangements are all provided. These demands of the body are not really problems, but we have made them into problems. The Vedanta Sutra enjoins us not to concern ourselves with these problems. They are satisfied in any form of life. Our problem is to inquire about the source of all these manifestations. The human form of life is not meant for struggling hard to solve the material problems, which even a hog, a stool eater, can solve. The hog is considered to be the lowest among animals, yet he has eating facility, mating facility, sleeping facility, and facilities for defense. Even if we don't strive for these things, we will have them. Man is meant rather to find out the source from which all these things are coming. The Vedanta Sutra states that Brahman is that from which everything is emanating. Janmadi yasya yataha.
Philosophers, scientists, yogis, gyanis, and transcendentalists are all trying to find out the ultimate source of everything. This source is given in Brahma Samhita Sarvakaran Karnana. Brahma Samhita 5.1. Krishna is the cause of all causes. Understanding Krishna to be the prime source of everything, how do the great souls act? Krishna himself characterizes them in this way. Rajni, Bhagavad Gita 9.14 Satatam kirtiyanto mam yatantascha dridvrata namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Purification is this process of Bhakti Yoga, the chanting of Hare Krishna. The great souls, understanding the nature of God, His descent, and His mission, glorify Him in so many ways. But there are others who do not accept Him. Krishna also mentions them in the 9th chapter. do you approve? Hare Krishna Prabhuji. Avjananti mamuna manashi tanumashtam param bhavamajananto mam bhutmaheshwaram. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. Bhagavad Gita 9.11. The Mudas or foolish men who are lower than the animal deride him. Any person who does not believe in God must either be a madman or fool number one. There is no reason not to believe in God, and there is every reason to believe in Him. Man may say that he does not believe in God, but who gives him the power to say this? When death comes, this speaking power ceases. So, who is giving the power of speech? Has the speaking power come automatically from stone? As soon as the speaking power is withdrawn by the supreme authority, the body is no better than stone. The very power, the very power of speech is proof that there is a supreme power who is giving us everything. A Krishna conscious person knows that whatever he has is not under his control. If we do not believe in God, we must believe in some power beyond us, which is controlling us at every step. Call that power God or nature or whatever. There is controlling power in the universe, and no sane man can deny it. Okay. Krishna was present on this earth and appeared just like a human being with supernatural power. At that time, however, 90% of the people could not recognize him as God. They could not recognize him because they had no eyes to see. Param Bhavam Ajanta Bhagavad Gita 9.11. How is it possible to recognize God? He can be recognized through supernatural power by the evidence of authorities and by scriptural evidence. As far as Krishna is concerned, every Vedic authority has accepted him as God. When he was present on earth, his activity displayed were superhuman. If one does not believe this, it is to be concluded that he will not believe whatever evidence is given. Yes, Prabhuji. मुझे पढ़ना है. Yes, Prabhuji. One must also have the eyes to see God. God cannot be seen by material senses. Therefore, the Bhakti Yoga process is the process of purifying the senses so that we will be able to understand what and who God is. We have power of seeing, hearing, touching, tasting, and so on. But if these senses are blunt, you cannot understand God. The process of Krishna consciousness is the process of training these senses through regulated principles, specifically through the chanting of Hare Krishna. Shri Krishna further characterizes the Mudhas. Mudhas मतलब समझ गए ना यहाँ पे? Yes, Prabhuji. मूर्ख. Murk, yes, Prabhuji. ठीक. नवीन प्रभु Krishna. प्रभु जी पूछ रहे थे मूड़ा का मतलब तो मीनिंग बता रहे थे नवीन प्रभु Including me, Prabhuji, also. प्रभु जी आप नहीं पढ़ रहे नवीन प्रभु जी आज? नहीं प्रभु जी मेरा डिनर चल रहा है मैं बहुत स्लो खाता हूँ सॉरी Okay. Okay, so we can stop here and start with the learnings.
So we can start from Swati Mataji. हरे कृष्ण। तो इसमें स्टार्टिंग में हमने वो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से वो स्टोरी बताई साक्षी गोपाल भगवान की, कि भगवान कैसे अपने भक्तों के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हैं प्रूव करने के लिए कि सही क्या है। और भगवान एक्चुअली उस टाइम पे विटनेस थे जब उसमें ब्राह्मण और ओल्ड मैन की वो बात चल रही थी, वो बताने के लिए भगवान वृंदावन से कैसे इतना दूर, आई थिंक उड़ीसा में है वो जगह, हाँ, तो वहां तक वो भगवान चले गए। तो बहुत अच्छा लगा वो, तो वो वाली एक्चुअली वो लीला भगवान की हमें इंस्पायरिंग लगती है। वो सबसे पहले हमने गुड़गांव बेस में सुनी थी, वो सुन के हमारा पुरी जाने का मन हुआ था, वो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से सुनाया था। उसके बाद हम फिर पुरी भी गए थे, तो वो वाली और एक वहीं वहाँ पे अलारनाथ भगवान की जो लीला है, वो दोनों ही ऐसी है कि वो सुन के मन कर जाता है कि पुरी जाने का। तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे। दूसरा जो प्रभुपाद जी तो हर जगह है, बट वो देखने वाली वैसी आइस चाहिए, मतलब हर कोई नहीं देख सकता भगवान को, तो हमें उस लेवल पे लाना पड़ेगा। मतलब किसी को होना चाहिए उस लेवल पे, तो उसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम हैं, तो वो फॉलो करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बट कोई अगर ये क्लेम करे कि ठीक है जो ओरिजिनल फॉर्म है भगवान की, हम तो उसी की पूजा करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैसा परसीव करेंगे अगर, तो हमें वुड में, स्टोन में तो भगवान दिख सकते हैं। तो भगवान अगर बोल रहे हैं मतलब अपने भक्तों से, तो वो बातें भी करते हैं, तो उन्हें दिखाई भी देते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो स्टोन है, या किसी को भी जो है कि ये स्टोन है तो ये भगवान नहीं है। भगवान किसी भी फॉर्म में कैसे भी आ सकते हैं। तो ये चीजें थी। दूसरा फिर जो मूढ़ा होते हैं, फुलिश होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, भगवत गीता के रेफरेंस है यहाँ पे। या दैट इज माय रियलाइजेशन। यस, सो हाँ, मेरे को भी तो एक तो वो फास्ट टाइम बहुत ही अच्छा लगा साक्षी गोपाल जी का। मैं तो मतलब मैंने पहली बार सुना था, तो मैं तो गूगल करके भी देख रहा था कि भगवान देख कैसे रहे जो चल के आए थे द सेम टाइम। तो वो बहुत अच्छा लगा। और वो बहुत एक स्टार्टिंग में प्रभुपाद ने बताया कि जीव है ना, कोई भी जीव है वो मैटर का है, तो देयर मस्ट बी सम स्पिरिचुअल स्पार्क। जब तक हम उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं डालेंगे तब तक मैटर जो है वो यूजलेस है। तो ये जो है, ये तो हम अपने एनवायरनमेंट में से परसीव करते हैं कि कोई भी एनीथिंग उसके अंदर अगर कुछ स्पार्क नहीं डालते हम, है ना, चाहे वो ह्यूमन मेड है चाहे वो गॉड मेड है, तो वो तब तक वो चीज़ नहीं चल सकती। तो हमें, और वो जो स्पार्क है वो क्षीर दक्षा विष्णु के फॉर्म में हमारे हृदय में रहते हैं। तो ये चीज़ समझने में इतनी डिफिकल्टी क्यों आती है। और दूसरा, प्रभुपाद ये भी कन्विक्शन के साथ बोले कि इतने ज्यादा भगवान को समझने के लिए इतने ज्यादा रेफरेंस हैं शास्त्रों में, साफ साफ बता गया है कि वृंदावन मतलब भगवान ने जन्म लिया था, और भगवान वृंदावन में रहे, मथुरा में रहे, द्वारकापुरी में रहे, उसके इतने सारे एविडेंस है ना। और साइंटिफिकली भी समझा रहे हैं। अगर उसके बाद भी हम नहीं समझ पा रहे ना कि मतलब भगवान एग्जिस्ट नहीं करते और ही इज नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि वो सुपर ह्यूमन पावर के साथ बॉर्न हुए थे। मतलब जब पैदा हुए थे तो 2-3 दिन के थे, 7 दिन के थे, पूतना का वध किया, है ना। और जब पैदा हुए थे, जस्ट जब पैदा हुए थे तब भी वो 400 फॉर्म में थे। जब वसुदेव जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि मतलब आप इस फॉर्म में मत रहिए, है ना। तो वो तो पैदा होते ही भगवान थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो मतलब कि छोटे हैं तो ही इज वीक। तो वो तो सुपर ह्यूमन सुपर सुपर पावर के साथ पैदा हुए थे। और पैदा भी क्या हुए थे, मतलब वो तो मतलब कि ट्रांसेंडेंट। तो अगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे ना हम कि भगवान थे या नहीं थे, तो हमें कोई भी एविडेंस हमें जस्टिफाई नहीं कर सकता। और दूसरा मतलब तीसरा यही कि अगर मतलब फेथ, फिर वो ये है कि फेथ हर हर बार आता है कि फेथ इज इम्पोर्टेंट, फेथ इज इम्पोर्टेंट दैट कृष्णा इज देयर।
कृष्ण इज देयर इन एवरीबॉडी, कृष्ण इज देयर इन एवरीवन। तो अगर हम भगवान में जैसे मंदिर में जाते हैं और हम अभी भी मतलब वी शुड सी दैट कि वी शुड सी डिटीज एज लाइक कि वो भगवान ही खड़े हैं साक्षात। तो मे बी अगर हम प्यूरिफाई हो जाते हैं मतलब चैंटिंग करते करते या फिर भक्ति प्रोसेस में, तो हो सकता है कि वो एक दिन हमें साक्षात दिख भी जाए, जैसे साक्षी गोपाल जी थे, है ना। अदरवाइज हमें मंदिर में जाना चाहिए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि डीटीज हैं सिर्फ पत्थर के, हमें ऐसे ही देखना चाहिए कि भाई ये भगवान ही खड़े हैं साक्षात हमें दर्शन देने के लिए। तो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ, तो मुझे याद आ रहा था एक ब्रह्मा जी का एक पास टाइम आता है जब ब्रह्मा जी द्वारका में भगवान से मिलने आते हैं, तो द्वारपाल उनको रोक देता है कि नहीं अभी भगवान बिजी हैं, आप कौन? तो बोले अरे मैं ब्रह्मा हूँ, जाके बोलो भगवान को मैं आया हूँ मिलना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा भगवान से जाके जब द्वारपाल कहे कि कौन, मतलब कोई मिलने आए हैं आपसे, ब्रह्मा बता रहे हैं, बोले नहीं कौन से वाले ब्रह्मा ये पूछ के आओ। तो खुद कंफ्यूज रहते हैं कौन से वाले ब्रह्मा, मतलब आई एम द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग अब मेरे अलावा भी कोई रह गया क्या? तो अपने ग्लोरिफिकेशन में बता रहे हैं फिर मैं उस यूनिवर्स का जिसमें भगवान वामन रूप में आए थे, मैंने भगवान के चरण धोए थे, मैं 3 मुख वाला ऐसा ब्रह्मा, सारे वेद मेरे साथ चलते हैं ये वो। तो फिर उन्होंने जाके भगवान को बताया कि ऐसे ऐसे बता रहे हैं। भगवान बोले ठीक है भेज दो अंदर। तो पहले उनको बाहर वेट करना पड़ा, कुछ देर बाद फिर भगवान अंदर बुलाए उनको। तो भगवान उसी समय उनकी जिज्ञासा खत्म की, जिज्ञासा थी ना अंदर कि आप ऐसा क्यों बोले कि कौन से वाले ब्रह्मा, मेरे अलावा भी कोई है? तो उस समय भगवान उनको अनगिनत ब्रह्मा दिखा दिए, और ऐसे भी ब्रह्मा थे जिसके 4 मुख, ऐसे 5 6 ऐसे भी जिसके अनगिनत मुख भी थे, और सब सो भगवान से एक सॉरी टू साथ ही बात इंटरप्ट कर प्रभु रहे जी, थे। सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु जी। हाँ देखो लेकिन प्रभु मोहन लीला तो पहले हो चुकी थी बचपन में, हाँ मतलब भगवान के चाइल्डहुड पास टाइम्स में। तो ये कोई हाँ, दूसरे वाले ब्रह्मा जी थे क्या? मतलब आई थिंक दूसरे होंगे, मतलब क्योंकि ब्रह्म मोहन मोहन लीला तो लीला हो हो चुकी। चुकी थी। हाँ, उसमें तो हाँ हाँ भगवान ने मतलब सारे ब्रह्मा जी दिखाए थे जो ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे थे। तो उस टाइम पे तो ये पास टाइम हुआ था। देन फिर अगर दोबारा कैसे, मतलब पास टाइम नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब ब्रह्मा जी तब समझ गए थे ना कि और भी ब्रह्मा है मेरे अलावा। तो हाँ, ऐसा तो जब ब्रह्म मोहन लीला हुई थी ना, जी प्रभु उससे जी। पहले भी ब्रह्मा जी भागवतम पढ़ चुके थे, हम्म। और यस। उनकी भागवतम में तो कई करोड़ साल लगते हैं उनको कंप्लीट करने में। वैसा ही है जैसे हम लोग भी कितना पढ़ते लिखते हैं, बट फिर अच्छा। भी माया में हो जाते हैं, यस यस, करेक्ट। क्योंकि वो भी मटेरियल वर्ल्ड का ही पार्ट है ना। तो यस यस। जैसे इंद्र के साथ हुआ, भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए, है ना, उसके बाद भी हम बहुत सारी लीला में देखते हैं इंद्र मोहित ही रहते हैं हमेशा, फिर भी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। यस 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 प्रभु जी। इसलिए हम बार बार रियलाइज करना पड़ता है, नो नो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। हाँ यस यस प्रभु जी। ऐसे कहते हैं ना कि बुद्धि से इसलिए जानना दिक्कत है, डिवोशन से ही जान सकते हैं इसलिए रेगुलर डिवोशन करना पड़ेगा। करेक्ट प्रभुपाद ना? जी कई प्रभुपाद जी भी अपनी बुक्स में कई बार, मतलब बार बार बोलते हैं, हाँ, एक ही पॉइंट्स पे काफी जोर देते हैं, अलग अलग एग्जांपल देके समझाते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि क्या ये बार बार रिपीट कर रहे हैं यू आर नॉट द बॉडी यू आर द सोल, यस मतलब यस। कन्विंस करने के लिए रिपीट हो रहा है। और यही पॉइंट कल भी आया था ना, कल भी हम यही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्त नाम वाला, यस। कि जो जितना लिप्त है उतना ही वो कम भगवान की सर्विस कर रहा है, ये जो जितना ज्यादा सर्विस कर रहा है वो उतना ही कम लिप्त है भोग में। यस। तो वो बार बार इसलिए डिस्कस करना पड़ता है ताकि हमारा, स्पेशली मेरे जैसे व्यक्ति का भोग कम हो और वो भगवान की सेवा कर सके। तो मैं उस पॉइंट पे आ रहा था कि भगवान जब ब्रह्मा जी को दिखाए कि भाई देखो ये हैं सब, और उसमें भी 2 मुख वाले 3 मुख वाले अनलिमिटेड मुख वाले भी थे, तो ये सब भगवान को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे भगवान आज बता रहे हैं भगवत गीता में कि हवा की तरह मेरे अंदर ये रेस्ट करते हैं सब। अब इनको किसी को नहीं पता है पर ये मेरे अंदर रेस्ट करते हैं। तो फिर आगे मैं सोच रहा था जब भगवान फूल्स के बारे में बता रहे हैं कि फूल्स डिराइड मी एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अनलिमिटेड यूनिवर्स जो है वो भगवान के अंदर रेस्ट कर रहे हैं। उस किसी एक यूनिवर्स में एक जीवात्मा
रह रहा है तो उसकी तो पोजीशन नथिंग से भी नथिंग है, and then he is trying to understand Krishna through ज्ञान योग, which is so difficult, very very even आज के टाइम में साइंटिस्ट भी ये बोलते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स का, जस्ट एक यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, उसका 0.01% मास, टोटल मास का सिर्फ 0.1% ही वो पता लगा पाए हैं कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। बाकी 99.99 उनको भी पता ही नहीं है जिसकी वो रिसर्च कर रहे हैं। तो एक यूनिवर्स को ही रिसर्च करने में इतना अगर हेडेक है तो सोचो अनलिमिटेड को पता करना और फिर ये पता करना कि कहाँ रहे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। So that is why Krishna is saying fools deride me as normal human being। और भगवान की लीलाओं में देखते हैं पूतना, बकासुर, ये सब राक्षस भगवान को मारने आए ये सोच के कि इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इसलिए भगवान की लीलाओं में भगवान कहीं कहीं तो किसी राक्षस को ऐसे ही मार देते हैं एकदम इजीली। भगवान जब वापस आते हैं द्वार उधर, पहली बार आते हैं इधर कंस के पास, तो एक फल वाले को बताते ना, ऐसे ही बस हाथ उठाते हैं अपना, उसकी गर्दन उखड़ के आसमान में चली जाती है। और कहीं कहीं भगवान देखो जैसे हिरण्यकश्यपु है तो उसके साथ युद्ध कर रहे हैं पूरा अच्छे से, तो भगवान की लीला एंजॉय कर रहे हैं। कहीं 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 पे मूड नहीं है तो युद्ध छोड़ के भी चले गए, है ना, रण छोड़ के लाए फिर। So definitely in the Krishna has all control, he is all merciful, he has all powers, he is doing all his leelas. Only thing is that we have to understand him by our pure devotional service. That's the only way. Thank you, Retro. That's all from my side. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you so much. Deepak Prabhuji, सॉरी प्रभु जी, मैं तो काफी लेट ज्वाइन किया था एक्चुअली। हमारे बेस में कुछ ब्रह्मचारी आए हुए हैं वृंदावन से, तो थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम एक्सटेंड हो गया। और एक पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगा था, जो मैंने पढ़ा भी था, जैसे प्रभुपाद जी बताते थे कि जो लोग बोलते हैं कि भगवान में विश्वास नहीं कर, हम भगवान में विश्वास नहीं करते, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये बोलने की शक्ति भी तुम्हें भगवान से आ रही है। तो वो पॉइंट काफी अच्छा लगा था। और प्रभुपाद जी बता रहे थे कि अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन आप अगर देखें कि बोलने की जो पावर और स्पीच जो आ रही है वो कहीं से तो आ रही है, क्योंकि स्टोन से तो वो नहीं, अगर नॉर्मल स्टोन तो नहीं बोल सकता है ना, तो ये पावर आपको किसी ने दी है, तो पावर वही दे सकता है जो पावरफुल हो। तो एक तरह से मतलब आप अगर भगवान में बिलीव नहीं करते तो एटलीस्ट एक ऐसी पावर में तो बिलीव करें जो आपको कंट्रोल कर रही है, जो मटेरियल को कंट्रोल कर रही है। मतलब बोलना तो एक है ही, बाकी उसका जो नास्तिकतावाद है ना प्रूफ, वो जो इस बात पर टिका हुआ है कि नास्तिक ही मतलब Yes, भगवान नहीं है, नहीं, वो भी भगवान ही दे रहे हैं उसको इंटेलिजेंस की, तू नहीं कोई बात नहीं है टिका रहे। yes. तो जो भगवान को नहीं मान रहा है उसे नहीं मानने की जो प्रूफ है ये है, वो भी सब भगवान ही दिखाते रहते हैं कि देख ये हुआ ना, भगवान नहीं है, ये हुआ ना, नहीं हूं मैं नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ही कैन एंजॉय इन हिज ओन वे ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ही कैन एंजॉय। भगवान कहते हैं ठीक है मैं नहीं हूँ। Like child and father, sometimes हम लोग तो खेलते हैं ना आपस में, ठीक है। वो तो अभी ये क्वेश्चन भगवान कहते हैं इंटेलिजेंस एंड फॉरगेटफुलनेस देता हूँ, भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं। तो ठीक है आप इंटेलिजेंस दे रहे हैं, ठीक है, ताकि जीव आपको समझ सके, बट फिर आप फॉरगेटफुलनेस क्यों दे रहे हैं? तो इसीलिए ताकि जीव एंजॉय भी कर सके। अगर फॉरगेटफुल रहेगा तो फिर अपने हिसाब से जो एंजॉय करने की मेंटलिटी है उसमें वो रहेगा। अगर बार बार इंटेलिजेंस देंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो कहेंगे ठीक है ले तू एंजॉय कर ले। जैसे आज एक अभी जो ब्रह्मचारी क्लास हुई थी प्रभु जी, तो उसमें प्रभु जी एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि जो अगरबत्ती होती है, अगर उसे हम रूम में जलाएं तो उसकी जो स्मेल है, मतलब जो मतलब खुशबू है, हाँ फ्रेगनेंस है, तो वो अगर हम बाहर से आते हैं उस रूम में तो हमको लगेगा कि हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन हम थोड़ी देर उस रूम में ही रुक जाएं और फिर उसकी मतलब फ्रेगनेंस लेने की कोशिश करें तो हमें उतना मजा नहीं आएगा। तो घुटने लगेगा। हाँ तो इसको हम थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। Yes, yes, that's point I like. Yes, that's all from my side. Yes. Okay, so and Naveen Prabhuji, you want to add something? आप लोग मुझे एक पॉइंट, मतलब सारी पॉइंट्स कवर हो गए, बट एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा था जो भगवान ने ऐसे प्रभुपाद बताते ना, जब भगवान जब आए हुए थे तब भी 90% लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भगवान है, राइट।
तो आज भी वही है कि भगवान आपके सामने अगर आ भी जाएं, भगवान साक्षात भगवान आ जाएं कि आर बी रेडी टू एक्सेप्ट, कोई आके बोले कि हाँ मैं कृष्णा हूँ तो वो एक मेरे दिमाग में पॉइंट आया था कि उस समय दुर्योधन थे और भी कितने सारे ऐसे लोग थे जो भगवान ने बोला, दिखाया अपना, सही में एक्सेप्ट पा रहे थे। तो वो आई थिंक वो सुकृति होना बहुत जरूरी है, बिना सुकृति के वो होता नहीं है। या तो बस यही एक पॉइंट था मेरा। द्रौपदी का पास टाइम है जिसमें द्रौपदी का चीरहरण होता है। तो उसके बाद द्रौपदी को भगवान मिलते हैं वनवास के टाइम पे। मतलब द्रौपदी को चीरहरण के समय तो बचाते ही है भगवान, पर उसमें पर्सनली नहीं आते हैं ना, उसमें तो अपना वस्त्र के रूप में इनकारनेशन होता है, फिर वो उस समय बचाते हैं। तो जब पर्सनली मिलते हैं द्रौपदी को, तो द्रौपदी भगवान से कह रही है, पहले उन्हें ग्लोरिफिकेशन कर रही है। तो ग्लोरिफिकेशन में एक पॉइंट यही आ रहा है कि मैंने असितो देवलो व्यासा इन ऋषियों से मैंने सुना है। तो मैं सरप्राइज हो गया जब पढ़ के, मैं ही पढ़ रहा था, क्योंकि अर्जुन भी सेम ऋषियों का नाम ले रहे हैं भगवत गीता में 10 चैप्टर में, कि असित देवल और व्यास ऋषि आपके बारे में बताए हैं कि यू आर द कोज एंड ऑल कोज ऑफ ऑल कोजेस। तो द्रौपदी भी वही बोल रही है कि ये सब ऋषि मुझे हमें बताए हैं कि आप ही सारी सृष्टि को चलाते हैं और ये सब। फिर बाद में वो कंप्लेनिंग मोड में आ रही है, पहले ग्लोरिफिकेशन करती है, फिर वो कंप्लेनिंग मोड में आती है कि आपके रहते हुए भी वो भी जिंदा है, ये वो। तो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ, सब खत्म हो गए। तो लाइक यू सेड कि जो लोग थे जिनकी सुकृति थी, जो भक्ति किए होंगे पहले, वो उनका उन अथॉरिटीज पे भी विश्वास था कि नहीं बता रहे हैं इसका मतलब कृष्णा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। बाकी तो 90% लोग डेफिनेटली नहीं मानते थे। यस यस प्रभु जी। थैंक यू ब्रो, अमेजिंग पॉइंट। मुझे लग रहा है प्रभु जी कि टाइम का कंफ्यूजन तो नहीं हो गया कल मैसेज की वजह से लोगों को? हाँ मतलब हाँ, हो मेरे सकता ख्याल है। से आप हम एक्चुअली एक कंफर्मेशन पेंडिंग था ना अंशु माता जी हाँ से, इसलिए यस वो आज इन्होंने यस 7:30 पे शुरू किया होगा उदित वाले, मुझे लगता यस है। यस प्रभु जी, यस यही थॉट प्रोसेस था प्रभु जी, वो सबका कंफर्मेशन नहीं आया था, तो इसलिए मैंने वो ओके, कंफर्म भी नहीं किया था। अभी मैं कंफर्म कर दूंगा प्रभु जी, मतलब। हाँ फिर ग्रुप पे डाल दीजिएगा आप, एक हाँ बार जी, कंफर्म हो जाए हाँ जी कि कल प्रभु 7 से शुरू। चलेगा। जी, यस प्रभु जी, ओके, ठीक है। थैंक यू ब्रो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।